IELTS Speaking Booster is your key to success in the IELTS Speaking Test। आपको इंट्रो, क्यू कार्ड्स, फॉलो अप सब कुछ मिलता है। बैंड 8 लेवल तक का बिल्कुल सॉल्व इन IELTS Speaking Booster। एक बार पेमेंट कीजिए, अगले 6 मंथ्स तक के लिए अपने लिए कर लीजिए अनलॉक, एंड एब्सोल्युटली फ्री अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे और आपको किसी और स्टडी मटेरियल की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आज ही चेकआउट कीजिए, फॉलो कीजिए इसी लिंक को एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन आज। वेल गाइस, आज हम एक और नया क्यू कार्ड प्रिपेयर करने जा रहे हैं। द क्यू कार्ड इज टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू गिव अ टॉक टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। Well, isn't it interesting? The same cue card been asked earlier as well. Talk about a time when you gave a speech. It's one and the same thing. Talk about a time when you shared your opinion. One and the same thing. तो ये क्यू कार्ड्स ऑलरेडी मेरे अवेलेबल हैं, लेकिन एक और क्यू कार्ड टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन समबडी गेव यू इम्पोर्टेंट एडवाइस। तो उसी इंफॉर्मेशन या उसी पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सट्रैक्ट करके या उसी आइडिया को मैं यूटिलाइज करके इस क्यू कार्ड का एक नया सैम्पल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आई होप कि आपको पसंद ज़रूर आएगा। एज लाइक मैनी अदर क्यू कार्ड्स, आप इसे भी फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, गिव इट अ लाइक एंड कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आई ऑलवेज ईगरली वेट फॉर योर कमेंट्स। ना आइडिया बहुत ही सिंपल है कि मेरा जो स्कूल था वो हमेशा नए नए या इनोवेटिव तरीके ढूंढता था टीचिंग के। एक बार उन्होंने ये नया मेथडोलॉजी इंट्रोड्यूस किया कि जो सीनियर स्टूडेंट्स होंगे वो जूनियर्स के कोई ना कोई टॉपिक पर एडवाइस या लेक्चर देंगे। तो अब क्या हुआ कि जब आप 10+2 में थे, एट दैट टाइम यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू गिव अ लेक्चर और स्पीच टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। तो अब यहाँ पर आप क्या बता सकते हो? यहाँ पर आपने उन्हें लेक्चर दिया मनी मैनेजमेंट पे। आप बता सकते हो कि बिकॉज व्हेन यू वर ऑफ दैट एज, आप बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी की वजह से पैसे फालतू की चीज़ों पे खर्च करते थे, एंड देन ऑफ कोर्स यू विद टाइम लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग द मनी प्रोडक्टिवली, using the money prudently, at the same time saving it for future use। आप उसे इस इन बिटवीन आप रिकमेंड कर सकते हैं कि मेरे एक अंकल ने मुझे ये एडवाइस दिया था, या बाय रीडिंग अ बुक जो मैंने आपको कई बार रिकमेंड किया, ज़रूर पढ़िए, रिच डैड पुअर डैड। और आपने इन बच्चों को रिकमेंड भी किया कि इससे आपकी रीडिंग स्किल्स भी डेवलप होगी, लैंग्वेज भी होगी और आपकी फाइनेंशियल्स के प्रति अंडरस्टैंडिंग काफ़ी जल्दी मैच्योर हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स आपने उन्हें ये भी रिकमेंड किया कि आप एक पिगी बैंक रखें, उसमें डे इन डे आउट जब भी आपके पास कुछ पैसे आए आप उन्हें ज़रूर सेव कीजिए। अपनी सेविंग से आप जब स्टेशनरी या कुछ ऐसी चीज़ खरीदेंगे आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे। और आपके इस लेक्चर्स को बच्चों ने बहुत ही इंटरेस्ट से सुना, आपने बहुत ही प्रोएक्टिव या इंटरैक्टिव वे से इसे डिलीवर किया, कुछ इंटरेस्टिंग जोक्स और एग्जांपल्स दिए, और ऑफ कोर्स यू कैन से दैट they were really impressed the way you presented and overall it was the time। तो आइए देखते हैं इसका सैम्पल आंसर कैसा होगा। Well, I believe I have good public speaking skills and I never miss a chance to deliver a speech or face the public to present my views, and this thing developed when my school introduced a very unique method of teaching। It was actually to develop the public speaking skill among children, and for that reason, once when I was in 10+2, I got the opportunity to present a talk in front of junior students of grade 5th. So for this, I chose a very interesting topic of money management. I do remember when I was of the same age, I was very much into spending money on unwanted things. Often I ask my parents for money and buy fizzy drinks, wafers, chips, chocolates and others, and it was not only ruining my health but I was wasting the hard-earned money of my parents. Needless to say, in this age children are quite immature and they do not appreciate the true value of money, and for that reason I presented this talk in front of these 5th grade children. They were quite
impressed the way I was presenting my views, and I kept my talk quite intriguing. I shared some funny incidents. In fact, I cracked a couple of jokes to keep their interest level intact. I also recommended them to read the book Rich Dad, Poor Dad, which I myself read, that really helped me to understand the financial management in a better way. Last but not least, in my lecture, I also recommended them to have a piggy bank in which they must save at least a part of their pocket allowance. This way they can save money and buy something big for them. And I gave my personal example when out of my pocket money I paid my school fee, and it was a proud moment for my father. So, and this particular activity developed my interest towards public speaking, and today I can easily handle public talks or give speech or lecture to others. Continue to watch my other videos for your IELTS speaking test preparation, and if you get to know about any new cue card, don't hesitate to share with me in the comment section. Thanks for watching. Bye-bye.